Good evening viewers and welcome to today's top stories with MyNewsNE. I am Pinaki and now let's look at the headlines before we start with the bulletin. Growth of India incomplete without Northeast states' contribution, says Vice President Dhankar. Manipur's ATSUM takes out solidarity march opposing Meitei's demand for inclusion in ST category. Agartala to get its first international flight services in June. Meghalaya Chief Minister Sangma announces merger of two PDF MLAs with NPP on May 6. And now the news in details. The Vice President of India, Jagdeep Dhankar, today said that the growth of India is incomplete without the participation and involvement of the 8 northeastern states of the country. And Jagdeep Dhankar landed in Assam earlier today to attend the 21st convocation ceremony of Tripura University, where in his address speech he highlighted the importance of participation and involvement of the 8 northeastern states of India. He said that the 8 states of northeastern region are truly Ashtalakshmis of India. Without their growth, involvement, participation and contribution, Bharat will remain incomplete. And at the convocation ceremony, the Vice President remembers the warriors of Assam who had fought great battles in the history of the state. And he also said that it is great pride that we recall heroic valor of King Prithu Jalpeshwar of Kamrup, who defeated Bakhyatar Khilji, the destroyer of Nagaland University. We also recall with honor the legendary Ahom warrior Lachit Borphukan, who defeated Mughal armies in the famous Battle of Saraighat. He urged the students to always respect their teachers, as no education can fructify into a good human without facilitation by a good guru. After attending the ceremony, Vice President Dhankar left for Manipur to visit Dhanamjuri University in Imphal, and he scheduled to take part in an interactive session with the students and the faculty of the university. विद्यार्थियों को तराशने का प्रयास किया, उन सभी अभिभावकों का जिन्होंने अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लाकर इस ऊंचाई तक जाने के लिए सहयोग किया, और साथ ही उन सभी भैया बहनों को भी जिन्होंने आज इस दीक्षांत समारोह में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करने पर उन सबका यहाँ सम्मान आयोजित किया जा रहा है। बंधुओं, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आने वाले 2047 में हम आजादी की शताब्दी वर्ष का भी मनाएंगे। मैं सोचता हूँ कि यह आपके और मेरे सबके लिए एक सोचनीय विषय है। इस अमृत महोत्सव को और इस शताब्दी वर्ष को हम किस रूप में आगे बढ़ाएं। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने का आपका और मेरा दायित्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कल्पना को साकार करने के लिए हम सबको चुनौती दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह केवल नारा नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना है। इस अभिन्न अंग को इस विद्या मंदिर के द्वारा हम परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इसके लिए सभी विद्वत जनों को पाठ्यक्रम में जहाँ जहाँ आवश्यक हो उसमें परिवर्तन करने का मन बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये विद्यार्थी ही भविष्य का भारत होगा, भविष्य का आसाम होगा। उसे बनाने में हम किस तरह से अपने पाठ्यक्रम को बनाएं, जिसके कारण से आज देश के सामने जितनी चुनौतियां खड़ी है, उन सब चुनौतियों को हमारा बालक विजय प्राप्त कर सके। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हम केवल नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों की फैक्ट्री नहीं है, हम वास्तव में लोगों को काम दे करके इतनी बड़ी जनसंख्या को
उसके पैरों पर खड़ा करने का एक हमारा संकल्प है। लोकल फॉर वोकल के बारे में जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उसे साकार करने के लिए हमारे ये सभी विद्यार्थी भाई बहन इस और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मैं सोचता हूं कि हमें केवल शिक्षित बालक नहीं बनाना, मैं सोचता हूं कि भारत की परंपरा यह रही है कि हमने मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और And now next, moving towards Manipur. A solidarity march by tribal bodies of Manipur protesting against inclusion of Meitei community in scheduled tribe list was held today. The All Tribal Students Union Manipur, the apex tribal body in Manipur, announced a solidarity march in the hill district of Senapati, Ukhrul, Kangokge, Tamenglong, Churachandpur, Chandel and Tengnopal, opposing the demand of the Meitei community's inclusion in the ST list. Several protesters holding placards came out in huge numbers supporting them in the solidarity march themed "Come Now, Let's Reason Together." In an official memorandum dated earlier on April 27, the ATSUM kept forward their decision to hold a solidarity march on May 3rd, stating, and whereas the meeting of ATSUM dated 27 April, while considering the pressing nature of the situation and as endorsed by the meeting of the Tribal Students Organization of Manipur dated 21 April, resolved to organize the Tribal Solidarity March on 3rd May in all hill districts under the theme, "Come Now, Let Us Reason Together." The meeting also constitutes a district-level coordination team to facilitate the grand success of the proposed march in each hill district, with the assigned responsibilities of coordinating with apex organization of the concerned district, mobilization of resources, mobilization of participants, effective coverage of the event in media and other necessary arrangements required for the event. Although the solidarity march was peaceful, there were isolated reports of protesters burning tires, with few others burning down a forest beat office at Bangwal of Manipur. And now next, moving towards Tripura. Tripura Transport Minister Sushant Chaudhary informed that Agartala will receive its first ever international flight service to Bangladesh Chittagong from June onwards. The minister informed that this during a press conference yesterday, and he said that low-cost carrier SpiceJet will introduce its 5 flight services from Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport to Chittagong by the first week of June, as necessary clearance for immigration and customs are expected to approve by this time. And according to reports, the development came days after Chief Minister Manik Shah met Civil Aviation Minister Jyotiraditya Sindhe in Delhi and requested him to boost the air connectivity in the northeastern state. আপনারা জানেন যে রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরে কর্ম অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা গত কয়েকদিন আগেও সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে আগামী দিনে পরিবহন মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে এবং তারই অঙ্গ হিসাবে কেন্দ্রীয় সিভিল এভিয়েশন তথা স্টিল দপ্তরের সম্মানিত মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে উনি সাক্ষাৎ করেন এবং রাজ্যের পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি নিয়ে ওনার নজরে আনেন এবং অবিলম্বে সেগুলো সুরাহা করার জন্য আবেদন জানান। আজকে
কেন্দ্রীয় পরিবহন দপ্তরের অর্থাৎ মিনিস্টার অফ সিভিল এভিয়েশন, অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তর এবং স্টিল দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া স্বাক্ষর করা একটি চিঠি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসে এবং গত 24 তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর যে মিটিং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা ওনার। And lastly, moving towards Meghalaya, a major political shift in Meghalaya will be seen on May 6th, announced by National President and Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma, as the PDF duo will be merging with the National Political Party. The PDF has 2 MLAs and the merger will take NPP's strength of legislators to 28 in the current in Meghalaya Legislative Assembly, hours of 60 members, just 3 seats short of gaining absolute majority. The 2 legislators of PDF are Bentador Lindo and Gavin M. Milliam. The merger of the PDF is seen as a significant development ahead of the election to the Sohyong Assembly seat slated on May 10. The election to the Sohyong Assembly seat was adjourned just before the February 27 Assembly election due to the death of United Democratic Party candidate Horju Donkupar Roy Lindo, a former minister and leader of the UDP. And Conrad made this announcement as he campaigned through the night at various villages in Sohyong for NPP candidate Samling Malingyang for the upcoming by-election to the Sohyong constituency on May 10. And he met the people, talked to them and danced with them at the village of Lome, Nongpathau and Kre. He further stated that MLAs of parties like the Congress or the UDP may get an MLA scheme of rupees 2 crore every year, but the Chief Minister has rupees 17,000 crores in schemes for the people. Therefore, if the people vote for the CM's candidate, they can imagine how much development and schemes they can get. And that's all for today. We will be back tomorrow. Till then, keep watching My News Northeast.